Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. Good morning to everyone. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. As we know that newspaper is very important for each and everyone. We should know about that what is happening around us. It makes you an aware citizen. And apart from that, students who are preparing for the exam like CLAT, AILET and different management exams, this is very important to know about the current affairs things, and the best source is that newspaper. So majorly we discuss about the Hindu and Indian Express. And in this news analysis, we discuss about important news that we cover from all major newspaper that we covered in this session. And one more thing is that before we start, please let me know if my voice is audible. Am I clearly visible to everyone? Am I audible and visible to everyone? Okay. So as we know that newspaper is very important, right? So what is important to know about in current affairs is that the basic things that you should know about is what is happening around us. And in news analysis, what exactly we discuss about national news, we discuss about international news, we discuss about economy based news, sports, science and tech, personal news, summits and conference and miscellaneous. And we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament, that we also discuss. So as we know that newspaper is a best source to knowing the current affairs. And make sure guys, if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. And here is the quote of the day, that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Which means that अपनी जर्नी की शुरुआत आपने पहले कहाँ पे की है, that's not a matter at all. But आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं with improving day by day yourself. And questions of the day, and we'll ask the 5 questions. That questions will gives you an immense idea like what things that you should keep in mind while you are reading newspaper, because most of the questions के जो source हैं वो हमारे directly the Hindu और Indian Express and quick tips में, मतलब with the help of mnemonics, with the help of any kind of story that you will learn the quick tips, which means इन टिप्स देखते हैं आज की कहानी क्या है. सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने, what is Universal Declaration of Human Rights adopted 75 years ago. 75 years ago on December 10th, that was a date, December 10th को क्या हुआ था, United Nations General Assembly approved the Universal Declaration of Human Rights. So Universal Declaration of Human Rights approved by the United Nations General Assembly, which is UNGA. And ये जो declaration हुई थी, that was in the place of Paris. So the declaration was proclaimed as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Which means in short, we जो declaration में ये चीज़ mention की हुई थी, जो achievements है for all people and all nation, in practice it has not always turned out that way over the subsequent decades. ये declaration क्या था? What exactly the declaration is? So ये relatively compact documents था. Declaration consists of preamble and 30 articles setting out fundamental rights and freedom. और जो हमारा ये Universal Declaration of Human Rights, Universal Declaration of Human Rights UDHR के में जो article 1 था, उसमें क्या था कि all human beings are born free and equal in dignity and rights. Make sure, again I am repeating this, that all human beings are born free and equal in dignity and rights. And Article 2 says that everyone is entitled to all the rights and freedom the declaration sets out. So, with our distinctions of any kind, such as race, color के बिहार पे किसी को discriminate नहीं करेंगे, right? So, race, color, sex, language, religion, political or other opinion,
national or social origin, property, birth or other status. Make sure आर्टिकल हमारा 17th भी यही कहता है. आर्टिकल 15th is talking about discrimination, right, on the behalf of caste, race, creed, gender and birth के ऊपर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में which is clearly mentioned about article 17th of the article 15th of the constitution. And my friends, article 17th जो है आपका article 17th is talking about untouchability, right? So other article states that everyone has the right to life, liberty and security of person, and no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. So it says that everyone has a right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution. और ये जो declaration है my friends, that enshrines the rights to freedom of religion, which is article 24 of the Indian Constitution, as well to freedom of opinion and expression, which is article 19th of the Constitution. UNGA के जो rights हैं वो मैं आपके अपने Indian Constitution से भी लिंक कर रहा हूँ, so that you will get a fair idea कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी. And freedom of peaceful assembly, it says that everyone has right to education. My friend, राइट टू एजुकेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 क्लॉज ए में विच इज ऑलरेडी मेंशन इट. ठीक है, तो ये जो आपको मेन चीज़ें ये समझनी होगी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स which was adopted 75 years ago, what was the main crux that we have discussed, what are the important takeaways and what the important things that need to be pondered. Here we have the next article here is talking about, इसमें है nation takes small step on climate adaptation but little movement on other tough issues. So इस आर्टिकल में ओवरऑल जो बात हो रही है किसके ऊपर में बात हो रही है. यहाँ पे रिसेंटली आपको पता है कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की मीटिंग हो रही है. कहाँ पे? ऑब्वियस वी हैव डिस्कस्ड UAE. सो यहाँ पे the contentious issue to fossil fuels phase out negotiation that were still engaged in information discussion to look the common ground. So on the adaptation front, the small breakthrough that emerged was a draft text on the global goal on adaptation on GGA, and what things that you should cover about is 1.5 degrees Celsius threshold is a global goal of mitigation. And it has been a long pending demand of developing countries, primarily to ensure more focus and resources mobilization on adaptation. However, जो हमारा global goals है on adaptations are not as straightforward as they are mitigation. Adaptation is essentially a local efforts and yields local benefits. So ये जो draft है, ये जो text है, ये also talking about the countries to make an assessment of their risk and vulnerabilities, prepare and implement adaptation plans and put monitoring and evaluation system in place. जो इस केस में अगर आप देखें तो एक और चीज़ें आपको रिकॉल करनी पड़ेगी. तो 2026 में जो COP हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कहाँ पे हुआ था माय फ्रेंड, दैट वाज इन द ग्लासगो. उसमें जो कंट्रीज थे दैट अग्री टू फाइनलाइज द नेक्स्ट 2 years, जो फ्रेमवर्क था हमारा GGA का, उसमें नेक्स्ट 2 years तक इट वन ऑफ द डिलीवरेबल्स ऑफ COP28 इन दुबई. सो यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझने वाली बात है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है IEA ऑन UAE सक्सेस क्लेम्स नॉट इनफ टू ब्रिज इवन 30% of emission gap by 2030. So a pledge by more than 100 countries to triple global renewable energy capacity by 2030 and double the growth in energy efficiency. So इसमें हमें सबसे पहले बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस करना होगा, राइट. एंड COP के जो डायरेक्टर जनरल है दैट इज़ माजिद अल सुवैदी, ये इसके डायरेक्टर हैं. आप इसका नाम याद रखें, इनका एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेते हैं कि COP 28 हमारा जो दुबई में हो रहा है उनके डायरेक्टर कौन है, विच इज़ नोन टू बी अ माजिद अल सुवैदी. दैट हैड, उन्होंने ये चीज़ें मेंशन करी. एंड IEA दैट ग्लोबल एनर्जी वॉचडॉग जो है जिनका काम होता है, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इमीटर है, ये भी आपको जाननी पड़ेगी.
And IEA, the global energy watchdog, said the pledge were welcome, but themselves not adequate to enforce the requirement emissions cut by 2030. And this reduction in 2030 emissions represents only around 30% of the emission gap that needs to be bridged to get the world on a pathway compatible with limiting global warming to 1.5 degrees Celsius. This is all about the crux of this article. चलिए नेक्स्ट वन में देखते हैं अंबेडकर साहब का क्या ड्रीम था, तो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे. सो जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है माय फ्रेंड इज सिनोनिमस विद द जिसमें बोथ वैल्यू ऑफ सोशल हार्मनी एंड रिफॉर्म्स टू इंश्योर डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट टू इट्स पार्टिसिपेंट्स. स्पेशली अगर हम बात करें लाइक हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड एंड सोशली मार्जिनलाइज पीपल. सो बाबा साहब अम्बेडकर का क्या ड्रीम था, वो क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस वे में देखना चाहते थे. Baba Saheb Ambedkar emerged as a torch bearer of liberal enlightened idea and expected the post-colonial India. And post-colonial India जो होगा that would be distinct from the exploitative Brahminical past and invites Dalit and Adivasis people. Because see, जो आपके marginalized people हैं that should be equal shareholders in the nation's economic and political development. So what about the things that we are going to discuss, that B.R. Ambedkar principles of social justice that would reprimand the current realms of neoliberal economy. And my friends, this is very important to know and understand what is neoliberalism that we had discussed couple of times in the newspaper analysis. And Dalits and Adivasi that would direct the market to be more responsible towards the worst of social groups. Recently, we have seen there was a clash between Kuki and Meitei tribes. It was in the Manipur. So why this is not the dream what it was seen by the B.R. Ambedkar Sahab. And Ambedkar's become crucial in such a discourse because his approach allows us to diagnose illness in the social and economic order. So यहाँ पे जो social order है, the mechanism है social justice की, that is not radical and transformative unlike the Marxist model की अगर हम बात करें यहाँ तो. It provides more sensibilities to institution and make it responsible towards the diverse population. So it is well documented that neoliberal markets जो है that is alien to the such ethical values and overtly celebrates the exclusive control of few corporate bodies. So आदिवासी concerns में अगर हम बात करें यहाँ पे that protect their habitats, वो हमारे इकोलॉजिकल ऑर्डर्स को मेंटेन रखते हैं, कल्चरल ऑटोनॉमी को मेंटेन रखते हैं, दैट मस्ट बी एड्रेस व्हाइल इंडोर्सिंग द फैक्ट अबाउट द मार्केट इकोनॉमी इनएविटेबिलिटी. सो द न्यू फ्रेमवर्क ऑफ सोशल जस्टिस मस्ट इंश्योर दैट एन इम्प्रेसिव क्लास अमंग दलित्स एंड आदिवासीज emerge as the leaders, business entrepreneurs and influencer in the economic sphere. So the two things that as we know that the Ambedkar Sahab अगर before post pre-colonial era की बात करें, before we got independent, that time also Ambedkar Sahab fought for the scheduled caste people, scheduled tribes people and scheduled caste people and Dalit and Adivasis जिसकी बात कर रहे हैं scheduled tribes की, that should not be identified only as the poor and migrant working class. So my friend, this is very important because that is dependent upon the benevolence of corporate social responsibility for their livelihood. So these groups should be advanced as the essential components of the urbanization, industrial productions and technological innovations. So जो हमारा अंबेडकर जी का विजन था about the social justice that will help us to redefine capitalism as a pluralist and cooperative mode of economic order, जो हमें इस चीज़ की गारंटी देता है the substantive participation of Dalits and Adivasi in the market economy in the associated institution of power and privilege. सो माई फ्रेंड्स, ये आपको दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस साल भी अगर आप क्लाट के एग्जाम में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये स्टैटिक टॉपिक पे अम्बेडकर की स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने पूछी थी. एंड अम्बेडकर साहब इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो वी शुड नो अबाउट व्हाट वाज हिज विजन टुवर्ड्स द इंडिया. लाइक जवाहरलाल नेहरू की जो विजन थी जो उन्होंने यहाँ पे मैंशन की थी एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
जो हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू जी भी पास की थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच मीन्स दैट हाउ वुड आवर कॉन्स्टिट्यूशन बी एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो ऑब्वियस दैट वो आज के टाइम में हम सोशल जस्टिस की तरफ मूव कर रहे हैं, बट उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन द आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल माय फ्रेंड्स, इसमें गवर्नमेंट मेक्स एयर कंडीशन ट्रक केबिन मैंडेटरी फ्रॉम अक्टूबर 2025। तो यहाँ पे अब ट्रक्स में भी आपके एयर कंडीशंस होंगे। ऑल न्यू ट्रक्स मैन्युफैक्चर और आफ्टर अक्टूबर 2025 के बाद मस्ट बी इक्विप्ड विद AC केबिन्स फॉर ड्राइवर्स एज द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने इशूड किया नोटिफिकेशन फॉर मैंडेटिंग एयर कंडीशन ट्रक केबिन्स। मतलब एयर कंडीशन ट्रक में मैंडेटरी है। सो व्हीकल्स हैं मैन्युफैक्चर्स ऑन एंड आफ्टर अक्टूबर 1st 2025 shall be fitted with an air conditioning system for the cabin or vehicles of N2 and N3 category। और हमारे अभी यूनियन रोड में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, वो है हमारे नितिन गडकरी साहब। चलो जी, नेक्स्ट वन, बिहाइंड लीगल चैलेंज प्रोमिस टू जम्मू एंड कश्मीर बाय फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन एक आपके सामने एक न्यू चैलेंज। पूरी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और आप इसमें देखें क्या कहानी थी आर्टिकल 370 की। वो आर्टिकल 370 पे अभी लीगल चैलेंज की क्यों बात हो रही है, जस्ट अ सेकंड। सो माय फ्रेंड, सबसे पहले आपको समझना होगा आर्टिकल 370 के बारे में। व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन, why the key challenge against the abrogation that is framed in the simple questions. So at the heart of legal challenge before the Supreme Court to the central amendments of Article 370 of the Constitution, मैं इन शॉर्ट में इसे बताने की कोशिश करूँ, उसमें एक वर्ड था टेम्पररी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। So Article 370 of the Constitution is sanctity of the legal promise carefully negotiated by the framers of the Constitution, the state of Jammu and Kashmir. So in the 16-day hearing, the Supreme Court heard argument that the constitutional promise Article 370 is premised on 3 basic guarantees. पहला क्या देता है हमें वो, asymmetric federalism, autonomy and consent of the people of Jammu and Kashmir represented through its legislature. तो सबसे पहले हम थोड़ी सी पास्ट में आपको जाननी पड़ेगी इसको समझने के लिए कि हमारे पास क्या एक्चुअल में फेडरलिज्म है। तो 27 मई 1949 को क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट इंडिया क्लियर द ड्राफ्ट आर्टिकल 370। ये आर्टिकल 370 जो है 27 मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया। एंड एज पर द टर्म्स इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विच वर साइन इन 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन हुआ, एक्सेशन साइन हुआ, while other provisions of the Constitution were debated in the Constituent Assembly after deliberation of its drafting committee. So the situation with Article 370 was different according to constitutional scholar A.G. Nurani. Article 370 was discussed for 5 months by then Prime Minister of India Jawaharlal Nehru and his colleagues with the Prime Minister of Jammu and Kashmir Sheikh Abdullah and his colleagues from May to October 1949. So only states in Union of India which negotiated the terms of its membership with the Union 1949 में Constituent Assembly granted its imprimatur to this agreement. और the 3 guarantees that were codified in Article 370, first जो हमारा फेडरलिज्म की बात थी, asymmetrical federalism would mean that India would not make laws in Jammu and Kashmir except for 3 subjects. तो आर्टिकल 370 में क्या था, ये 3 लॉ आप जो है डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन को छोड़ के दैट इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पार्लियामेंट कुड नॉट मेक लॉज बियॉन्ड देम ओनली द कॉन्करेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहुत सारे स्टेट्स हैं हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, दीज आर कोडिफाइड इन आर्टिकल 371 एंड 371A, जैसे आपका आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड दोज इन द नॉर्थ ईस्ट। So the petitioner argued that the asymmetric federalism cannot be termed special status, which needs to be removed by the bring Jammu and Kashmir on par with the rest of India. Second जो हमारा आपको ये समझना होगा कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है।
which declares India as a union of states. And Article 370 of the Constitution of India would not be applicable to Jammu and Kashmir for the rest of India. And the Constitution lays down and the elaborate procedure in the Article 367 to enlarge or curb state power through the Constitution amendment. फिर भी Jammu and Kashmir, the Constitution provides that a mere execution, and this petition argues is the autonomy guaranteed by the Constitution. तो आप देखते हैं क्वेश्चंस क्या है. The key challenge against the abrogation is framed in the simple question: क्या Parliament do indirectly what it cannot do directly? समझने की कोशिश करते हैं. Had there been no president rule, would be Jammu and Kashmir legislature that have allowed such a move, and the petitioner that have also questions how the Constituent Assembly can simply be assigned a new meaning. So, my friends, this is the things that which have mentioned or enshrined in our Constitution. So, in short, अगर समझने की कोशिश करें, इसमें आपको ये चीज़ें समझो, जो legal opinion divided क्यों है for और against में. Because Article 370 was temporary provision of the Constitution, जिसमें special privilege that were temporary cannot confer rights in opposition with Article 14, which guarantees equality that can be revoked through president order. Against में क्या क्या है? यही same provision है Article 370 that cannot be used to dilute it, और Parliament जो है that cannot replace state legislature with the governor. So ये जो mention थी Article 370 में the word was temporary, and that not seeking state legislature nor is against the spirit of consultation, and Supreme Court precedent cite Parliament approval for the abrogation. So which we have discussed in this article. जब यहाँ पे 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया को डिक्लेयर किया था, आर्टिकल 370 को डिक्लेयर किया, एंड एज पर द टर्म्स इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विच वाज साइन इन द ईयर ऑफ 1947, दिस थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई द सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट अभी आने वाले हैं इसके ऊपर, जिसमें ये चीज़ मेंशन की जाएगी. दैट वाज अ लीगल चैलेंज दैट प्रॉमिस टू जम्मू एंड कश्मीर बाय फ्रेमवर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब 370 को यहाँ पे 3 लॉ गारंटीज किए थे उस टाइम में आर्टिकल 370 में. फर्स्ट, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, जिसका मतलब क्या होता है कि इंडिया कोई भी लॉ, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट वुड नॉट मेक एनी लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट द 3 सब्जेक्ट्स. और वो 3 सब्जेक्ट्स क्या था माय फ्रेंड? डिफेंस का था, एक्सटर्नल अफेयर्स का था, एंड कम्युनिकेशन का था, विच इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. सो पार्लियामेंट जो है हमारे इंडिया के अंदर, उनका काम क्या होता है? लॉ बनाना. बट पार्लियामेंट कुड मेक लॉज बियॉन्ड दैम ओनली विद द concurrence of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. So this things is very important to understand that ये basic आपको जो background है वो मैंने आपको बहुत डिटेल मैनर में बता दी. अब उसके बाद सेकेंड हमारा आर्टिकल 1 हमारा क्या कहता है? which declares India as a union of states. And आर्टिकल 370 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, that would not be applicable to Jammu and Kashmir, वो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के पार्ट पे ऊपर भी है. Like Article 371 and 371A for states including Andhra, Maharashtra, जिसको स्पेशल स्टेटस देता है, राइट? लाइक यहाँ पे देखो की पॉइंटर्स की जानने की बात करें यहाँ पे, तो फिर से मैं आपको बता दूं ऑन गोइंग स्टोरी क्या है. ओवर द 4 years आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर lost its special status following the abrogation of Article 370, and the state were reorganized into 2 union territories, जो आपका पहला क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, एंड दूसरा आपका लद्दाख. द सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को शेड्यूल किया टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट ऑन अ बैच ऑफ पिटीशन, जो चैलेंज करता है इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल डिसीजन. बात हो रही है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की. सितंबर 5 को यहाँ पे 5 जज थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, प्रिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस, जो हमारे इंडिया के भी कौन है? DY चंद्रचूड़ साहब जी. एंड दैट हैड रिजॉल्व द जजमेंट आफ्टर हियरिंग द पिटिशनर, सेंटर एंड जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर फॉर 16 days. जो बेंच थी दैट इंक्लूड्स में SK कौल साहब थे, संजीव खन्ना जी थे, एंड BR गवाई दैट विल रिटायर ऑन December 25th, एंड बाकी 3 जजेस थे इसमें इन लाइन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. एंड द कोर्ट heard a clutch of 23 petitions, and these included some which were filed before the August 5th, 2019, that challenging section 35A of the Constitution that empower Jammu and Kashmir to make special laws for its permanent resident. सेक्शन 35A क्या है? आर्टिकल 370 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर को हम स्पेशल स्टेटस देते हैं.
और पार्ट 16 में कॉन्स्टिट्यूशन में है टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, बट ये टेम्प्रोरी नहीं हुआ एज एविडेंट फ्रॉम टाइटल ऑफ पार्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं। पंडित नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम में थे 27 नवंबर 1963 को, said that Article 370 has been eroded and the process of gradual erosion is going on। फिर हमारे उस टाइम के होम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा साहब जी ने दैट अगेन ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा दिसंबर 4 1964 को बताया कि आर्टिकल 370 जो है इज अ टनल टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर। सो he further said that in the end only the shell that will remain, it will make any difference whether it's kept or not। so अब petition का क्या है concern वो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करी। कुछ petition ये कमेंट्स करते हैं कि आर्ग्यूमेंट अगस्त 2 को सबमिट किया था कि आर्टिकल 370 का मतलब है टेम्प्रोरी प्रोविजन होनी चाहिए until the constitution assembly for the erstwhile that time state look at the decision। सो ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट हैविंग एक्सपायर्ड इन 1957, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हमने क्यों करी थी। एम.एन. रॉय साहब थे, एम.एन. रॉय लेटर ऑन ये हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। सो एम.एन. रॉय साहब ने सबसे पहले आइडिया दी थी टू मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। व्हाट वाज द पर्पस टू एस्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टू गिवन द आइडिया व्हाट शुड बी द फ्रेमिंग, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा फ्रेम होना चाहिए उसके बारे में आइडिया था ये। सो यहाँ पे जो प्रोविजन था उसमें मेंशन की हुई थी टेम्प्रोरी वर्ड, राइट। सो इन शॉर्ट अगर बात करें यहाँ पे असेंबली हैव एक्सपायर्ड 1957 में एंड प्रोविजन जो था हमारा दैट बिकेम परमानेंट एंड कुड नॉट बी टच बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस व्हाटसोएवर, जो उस टाइम में मेंशन थी। तो बाद में जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन किया गया था जो उस टाइम के महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, so the petition contained that there was no merger agreement signed between the Union of India and then Maharaja of Jammu and Kashmir, but only an instrument of accession, and therefore there was no surrender of sovereignty. They argued that IOA limited parliament powers to make laws for the state so as ensure that its subject would be greater says। और petition contain करता है that the matter in that special status was capped by the presidential order, और ये अगस्त 5 2019 को जिस टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया गया दैट अमाउंटेड टू अ फ्रॉड ऑफ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेंट्रल एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसमें वही सारी सेम चीज़ें हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, आर्टिकल 370 क्लॉज 3 की बात हो रही है। अगस्त 5 2019 को सेम डेट में चेंज टू आर्टिकल 370 और सेंटर ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द erstwhile state of Jammu and Kashmir to union territories Ladakh and Jammu and Kashmir। So Ladakh was carved out as a UT without a legislature, while Jammu and Kashmir with a legislative body। जैसे अपने दिल्ली में दिल्ली एक UT है but यहाँ पे legislature है। So with no election having taken place in Jammu and Kashmir, both the UT and being administered by the center appointed lieutenant governor। जो हमारी डिलिमिटेशन है पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेचर की with the reorganization of Jammu and Kashmir, center also formed the delimitation commission led by Justice Ranjana Prakash Desai in March 2020। तो दिस वॉज द क्रक्स। अब यहाँ बात करते हैं क्विक टिप्स की और इसमें है अपना सार्क कंट्रीज, जिसमें है मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। तो आप MBBS पेन के थ्रू लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द निमोनिक्स दैट सार्क कंट्रीज। And states in India sharing boundary with Bhutan, Sikkim, Arunachal, Assam and Bengal। Here now it's time to questions of the day। चलो फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। यहाँ पे मैंने आपको कल ही डिस्कस की थी, गरबा को यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला गया। तो नाउ गरबा विच इज़ द फोक डांस ऑफ गुजरात इज यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। विच स्टेटमेंट इज एक्यूरेट? और सी हमारा राइट आंसर है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन that recognize and safeguard cultural practices, tradition, knowledge and skills that are considered intangible cultural heritage। अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट, और ये देता है हमारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। डी इज द राइट आंसर। एंड द थर्ड वन, which of the following groups of planets are considered as gas giant in our solar system? And obvious, ये हमारा बी ऑप्शन है।
जो गैस जाइंट्स होते हैं, लार्ज प्लैनेट्स कंपोज मोस्टली ऑफ गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम with a relatively small rocky core. Which substance is commonly used in a cloud seeding, which is the artificial rain, and उसमें क्या होता है AgI, which is silver iodide. ये जो है हमारा silver iodide AgI हम इसमें यूज करते हैं. And cloud seeding, which means another name of artificial rain. And the last one is Pradhan Mantri G1 Yojana aims to build climate resilient cities, control air pollution in metro cities, provide financial support to integrated bioethanol project, and promote conversion of organic waste into biogas. ये जो राइट आंसर है माय फ्रेंड, सी वुड बी द राइट आंसर, दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंटीग्रेटेड बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री जन जीवन योजना. So government of India has been working towards the adoption of biofuels. Pradhan Mantri Jan Jeevan Yojana provides financial support to integrated bioethanol project to set up second generation ethanol projects. So my dear friends, this is all about the session and I hope that you enjoyed our session a lot. If you have any questions, please let me know in the comment section, and please share this beautiful session to your friends and family group because they must be aware what is happening around us. And make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. Stay tuned. We'll meet you tomorrow or next session. Till then, bye-bye and take care.